Hello everyone, welcome to my YouTube channel Arpita Sharma Classes, and I am Arpita Sharma, your educator. Let's start decoding the newspaper for today. Now before decoding the newspaper, I would like to tell you that the class PDF is uploaded on our Telegram channel. Okay, and the link to go towards our Telegram channel is given in the description box below the video. If after clicking on the link you are not able to access the Telegram channel, then you can just download the Telegram app. In the search bar you can write simplifying UPSC with ease. You will find our channel automatically. ऑल राइट, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, आज का डिकोडिंग शुरू करते हैं सुपर डिकोडिंग प्रोग्राम के अंदर। अब आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि क्लास का जो पीडीएफ होता है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो के जस्ट नीचे। अगर लिंक पे क्लिक करके आपसे नहीं ओपन हो पा रहा है टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, सर्च बार में आप डालना सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, before starting the class, this is a small announcement. If you are planning to subscribe to Unacademy Plus, or any of your friends are planning to subscribe to Unacademy Plus, then you can get 10% direct discount by using this particular referral code Sharma20. ये रेफरल कोड है, अगर आप या आपका कोई भी दोस्त आपका अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेने की प्लानिंग कर रहा है, तो आप 10% डिस्काउंट पा सकते हो Sharma20 कोड यूज करके। रेफरल कोड का बार आएगा, वहां पर आप ये कोड डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स डिकोड। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज विच वी आर गोइंग टू डिकोड, news 1 to 4 and news number 10. These important articles you have to read them yourself. Now I'll tell you which articles to read and from which articles to टेक आउट इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके, मैं आपको ये बता देती हूँ कौन सा आर्टिकल पढ़ना है और कौन से आर्टिकल में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं। देखो, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल अ बिल दैट अंडरकट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यू हैव टू टेक आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल फॉर जीएस पेपर 2। ठीक है, पर पहले पढ़ लेना, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। रोड टू इकोनॉमिक रिवाइवल रन्स थ्रू एग्रीकल्चर, अगेन यू कैन टेक आउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीएस पेपर 3। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर नाउ, this article you have to go through it, read India Bangladesh relations, right, based article is this, so you have to read it, इसको read करो, समझो और analyze करो। criticism is not sedition, again read this, right, this is very very important for GS paper 2, also for essay and your interview। तो इसको समझना है आपको, जरूरी नहीं है इसमें से पॉइंट्स निकालो, बट अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स इंटरव्यू या essay के लिए इंपॉर्टेंट है तो लिख लेना। acts of violence, acts of grace, again read this article only and understand it. Okay, and the 10th news which we are going to study is India starts sharing maritime data. Now prelims facts for today, clemency powers of president are given under article 72. ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसी पावर्स जो होती है ना, पार्डनिंग पावर्स जो होती है प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दी हुई है? 72 में। ओके, now the first important news, Dhaka says it's reassured by Modi's briefing on NRC. Now here you have to make this flow chart in your register, notes register. आप जो भी करंट अफेयर का रजिस्टर बना रहे हो ना, उसमें इस नोट को इंक्लूड, इस फ्लो चार्ट को इंक्लूड कर लो। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स पे हमारा और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है वो कैसे बिल्डअप हो रहा है, इसको आपको लिखना है। इस तरीके का फ्लो चार्ट बना लो, जस्ट मेक दिस फ्लो चार्ट इन योर रजिस्टर ऑन एनर्जी areas, connectivity, cyberspace, trade, terrorism, tourism, credit. Okay, just make this flow chart. इस flow chart को फटाफट से बना लो। Dhaka will go by the assurances given by Prime Minister Modi and not the public statements by other Indian leaders on the NRC issue. Bangladesh government official has passed a statement that in Bangladesh is not going to ruin its relation with India just on the basis of some of the other Indian leaders or opposition parties on the issue of NRC. Bangladesh is going to believe on our country's leader when it comes to NRC. ओके, तो बेसिकली बांग्लादेश ने ये स्टेटमेंट पास किया है कि देखो, हम इधर उधर की कोई भी बात सुनाकर अपने रिलेशन को भारत के साथ खराब नहीं करने वाले हैं। एनआरसी के इशू पे कोई भी स्टेटमेंट जो भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के रिप्रेजेंटेटिव लीडर पास करेंगे, हम उस स्टेटमेंट को ही सच्चा स्टेटमेंट, सच्ची बात मानेंगे। ठीक है, clear everyone? So basically Bangladesh said that we are reassuring that India is our dear friend and we are not going to ruin our relationship with India on any of the statements passed by any other person other than the Prime Minister. Now
Basically here India Bangladesh relationship is very very important for GS paper 2, even for your PSIR optional. अगर Pol Science International Relation आपका optional है तो उसके लिए भी ये important है, right? Now India Bangladesh, the relationship is built on various parameters. This flowchart I am explaining now. ठीक है, ये जो flowchart मैंने इधर बनाया है ना, इसको explain कर रही हूँ. First is connectivity. India's neighborhood policy has focused on Bangladesh, which has emerged as a key interlocutor in India's Act East policy. इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है उस पे हमने उसके पॉलिसी के तहत हमने बांग्लादेश पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी बांग्लादेश इंक्लूडेड है. And sub-regional groupings like BIMSTEC and BVI and also India and Bangladesh are close allies, right, when it comes to these initiatives. जब इन initiatives की बात आती है, इंडिया और बांग्लादेश काफी क्लोज रहे हैं काफी सालों से. The Padma multipurpose bridge and Akhaura Agartala rail link will dramatically change connectivity within Bangladesh and with India. तो Padma multipurpose bridge हो गया या फिर Akhaura Agartala rail link हो गया, इसके थ्रू भी हम बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, right? Now waterways are also being revived in order to strengthen the connectivity between India and Bangladesh. Second comes cyberspace. First हमारा first was connectivity, second comes the cyberspace. Now Bangladesh has provided cyber secure connectivity between international gateway at Cox's Bazar to Agartala for faster internet connectivity in India's northeastern states. Highlight this point. Northeastern states के साथ connectivity और maximum करने के लिए cyberspace पैरामीटर पे भी इंडिया और बांग्लादेश ने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करी है. Then comes the energy. India has also become a partner in Bangladesh's nuclear power program with the beginning of construction at the Ropur nuclear power plant. Underline this. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. जब रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आती है तो इंडिया और बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में भी सहभागी बने हैं. इंडिया इज poised to export around 1100 megawatt of power to meet the energy deficit in Bangladesh. Again, an area where India is helping, supporting Bangladesh. Trade. Bangladesh is India's largest trading partner in South Asia. Underline this. ये बिगनिंग लाइन हो जाएगी आपकी. जब बात आती है ट्रेडिंग पार्टनर की तो बांग्लादेश जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है with an annual turnover of around $9 billion plus estimated informal trade of around $8 to $9 billion. Also if we can over here look at this, just give me a second. Yeah, to enable more Bangladeshi exports to flow into India, duty free entry was granted in the year 2011. 2011 में भी बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स को इंडिया में लाने के लिए ड्यूटी फ्री एंट्री दी गई थी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट के अंदर. सो यू हैव टू रिमेंबर साफ्टा अग्रीमेंट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज. ओके, साफ्टा अग्रीमेंट में कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है ये याद रखना है. Then credit. Indian investment in Bangladesh has reached $3 billion. Tourism. Over 1 million visas are issued to Bangladeshi citizens by India annually, and India and Bangladesh have also signed the revised travel arrangement 2018. Underline this, very very important. Revised travel arrangement 2018 is between which two countries? This is important for prelims. कौन सी दो countries के बीच में है ये agreement, ये याद रखिएगा, ठीक है. So where should the future focus lie between India and Bangladesh? Future focus हमें कहाँ करना है, किस पर करना है? Rohingya issue has imposed a huge economic and security burden on Bangladesh. Obviously वहाँ पर inflow जो रोहिंग्यास का है काफी लिमिट से ज्यादा हो गया है, तो बांग्लादेश के ऊपर सिक्योरिटी बर्डन भी बढ़ गया है और इकोनॉमिक फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ गया है. India on its part published the draft NRC in Assam to take in the genuine Indian citizens residing in Assam and to stop the flow of illegal migrants, and those of the migrants who are illegally living in India can be sent back. Thus the illegal migrants issue along with sharing of river waters will require a deft handling of bilateral ties between two countries. फोकस रहना चाहिए इन दो चीजों पर. इलीगल माइग्रेंट्स, अब एनआरसी के इशू होने के बाद इलीगल माइग्रेंट्स को अब वापस भेजा जाएगा चाहे वो कहीं से भी आए हो इंक्लूडिंग बांग्लादेश, और रिवर वाटर्स को भी शेयर करना है. तो ये तो इश्यूज है जिसके ऊपर बांग्लादेश और इंडिया को मिलकर काम करना है. सो इलीगल माइग्रेंट्स इशू आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ एनआरसी फाइनल लिस्ट एंड शेयरिंग ऑफ द रिवर वाटर्स, दीज आर द टू इश्यूज ऑन विच इंडिया एंड बांग्लादेश हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड हैव टू वर्क टुगेदर. राइट, क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया? The next important news is the only Indian in the largest
ever Arctic expedition. A native of Kerala's capital Thiruvananthapuram, 32-year-old polar researcher will be the only Indian among 300 scientists from across the world aboard the multidisciplinary drifting observatory for the study of Arctic climate expedition. एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मल्टीडिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी। ये एक मिशन है, किस एक्सपीडिशन के अंडर ये मिशन है? स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपीडिशन के अंडर। सो एक्सपीडिशन हैज बीन लॉन्च्ड, द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट एक्सपीडिशन, in which there is a mission, multidisciplinary drifting observatory mission, in which among the 300 scientists, one is an Indian, right, from Kerala. Okay, so here two things is important. First, for prelims you should understand the Indian mission on poles and IND-ARC, and for mains you should study measures undertaken to harness hydrocarbon resource from the poles. Polar regions में इंडिया ने क्या क्या मिशंस भेजे हैं ये आपको पढ़ना है, IND-ARC के बारे में पढ़ना है, और मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को निकालने के लिए पोलर रीजन्स में इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं. सो आवर गवर्नमेंट इज रीफोकसिंग priorities to the Arctic because of opportunities and challenges posed by climate change. आर्कटिक रीजन धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, ये बात हम सबको पता है. तो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है ये रीजन, इंडिया अपनी प्रायोरिटीज इसी रीजन को समझने में, इस रीजन को बचाने में लगाने की कोशिश कर रहा है. India has renamed National Center for Antarctic and Ocean Research in 1998 as the National Center for Polar and Ocean Research. हमारा 1998 का एक मिशन था जिसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशन रिसर्च. इस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च रख दिया गया है. इट ऑल्सो इज इन टॉक्स विद कैनेडा एंड रशिया, द मेजर कंट्रीज विद प्रेजेंस इन द आर्कटिक सर्कल, टू एस्टैब्लिश न्यू ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स. Okay. Presently, India only has one Arctic observation station near Norway. Underline this, it is important for prelims. Now let us understand the point of hunt for hydrocarbons. Hydrocarbons की जो हम hunting पे लगे हुए हैं उसका मतलब क्या है? Climate change was a very important decisive factor in India's rethinking priorities. Sea ice at the Arctic has been melting because of the climate change, right? Which means several spots are rich in hydrocarbon reserves. They will become more accessible through the air via alternative shipping routes. जैसे जैसे आर्कटिक रीजन मेल्ट होता जा रहा है, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स एरियाज जो है, हाइड्रोकार्बन रिजर्व एरियाज जो हैं, जो पहले इतनी इजीली असेसिबल नहीं थे, अब मेल्टिंग के वजह से रिवर रूट्स, सी रूट्स के थ्रू असेसिबल हैं. India and the Arctic. India is already an observer at the Arctic Council. What is Arctic Council? Underline this. This is important for prelims. Arctic Council is a forum of countries that decides on managing the region's resource and popular livelihood. वहाँ के लोगों की livelihood, वहाँ के resource को manage करने के लिए Arctic Council को तैयार किया गया है. India also set up an underground observatory known as IND-ARC in 2015. Okay, 2015 में भी IND-ARC करके एक underground observatory, underline the word underground observatory, इंडिया ने ओपन किया था 2015 में. ठीक है. So Indian mission on the Arctic. The Himadri station, अंडरलाइन दिस, हाईलाइट दिस, हिमाद्री स्टेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ये न्यूज ना प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट डाउन कर लो पॉइंट्स. दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, सो यू शुड नोट डाउन दी पॉइंट्स. ओके, सो हिमाद्री स्टेशन इज इंडियाज फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट स्पिट्सबर्गन इन नॉर्वे. ओके, तो ये इंडिया का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, हिमाद्री स्टेशन. All right, and it is located at International Arctic Research Base and inaugurated in 2008 by the Ministry of Earth Sciences. The United States Geological Survey estimates that 22% of world's oil and natural gas could be located beneath the Arctic. That is why the underground research station has been established. So what is Arctic Council? Advisory body. Promotes cooperation among member nations. जितने भी इसके member nation है, cooperation उसमें promote करता है उनके बीच में. Indigenous groups and member nations as per the Ottawa Declaration of 1996. It focuses on sustainable development and environmental protection of the Arctic region. It consists of 8 Arctic states: Canada, Kingdom of Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and United States. Underline this fact, India and China are one of the observer countries since 2013. This point is very important. This paragraph is very important for prelims. You have to remember which countries are a part of Arctic Council and which countries are observer countries. आपको ये याद रखना है इस point को पढ़ के कि कौन सी countries तो member हैं Arctic Council की और कौन सी countries सिर्फ observer countries हैं. Next important news.
CM yet to get clearance from MEA, Ministry of External Affairs, to travel abroad for C40 summit. Here C40 summit is important for prelims. यहाँ पर C40 summit important है. अब आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं बार बार कि मैम हम ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सर्च कैसे करें, तो थोड़ी एफर्ट्स सर्चिंग में डालनी पड़ती है, राइट? You have to put in little amount of effort in searching the news, right? टॉपिक का नाम डालो, important information आ जाती है, जो information आपके syllabus को match करती है वो आपको निकालनी है, right? You just can enter the name of the topic in Google and there are many information on the same topic. So the information which meets the demand of your syllabus and your exam, you have to pick it out. So for C40 summit I use this website. C40 summit के लिए मैंने ये website use करी है, right? The C40 Cities Climate Leadership Group is a group of 94 cities around the world that represents 1/12 of the world's population and 1/4 of global economy. It was founded in 2005 in London, UK. It's an international organization and focuses on climate change. These are the 3 important points you have to remember for your prelims. ये वो 3 important points है जो prelims के लिए आपको याद रखना है. So C40 Cities Climate Leadership Group is a group of 94 cities. It focused on tackling climate change, driving urban action that reduces greenhouse gas emission and climate risk, increasing the health, well-being and economic opportunities of urban cities. Founded in London in October 2005. You can draw this particular box in your register. इस box को अपने register में draw कर सकते हो. Next important topic, RERA Act applicable to plots sold under industrial projects. The Tamil Nadu Real Estate Appellate Tribunal has upheld a ruling by the Tamil Nadu Real Estate Regulatory Authority that projects such as SEZ, Special Economic Zone, and estates involving sale of industrial plots to investors come under the purview of RERA. तो तमिलनाडु रियल एस्टेट एपेलेट ट्राइब्यूनल ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स है ना, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना हो गया या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को इन्वेस्टर्स को बेचने के से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सभी रेरा एक्ट के अंडर आते हैं. सो हियर वी हैव टू स्टडी रेरा, दैट इज रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट. रेरा 2016, इट्स अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, अंडरलाइन दिस. It aims to regulate the things I am highlighting. You have to note it down. जो मैं highlight कर रही हूँ ना उसको आप लिख लो. The aim is to regulate real estate sector. Real estate sector को सही तरीके से regulate करने के लिए, चलाने के लिए इसको बनाया गया है. It empowers and protect the property consumers and make transactions fair and transparent. जो भी property खरीदते हैं customers, उनकी interest को protect करने के लिए बनाया गया है. और जो भी वो transaction करते हैं real estate में जो भी owners है उनके साथ, उस transaction को fair और clear बनाने के लिए इस act को तैयार किया गया है. Okay? It was enacted in March 2016, came into effect in 2017. Okay? The RERA Act was enacted under entry 6 and 7. Dealing with contracts and transfer of property of the concurrent list of the Constitution of India. Now you understand in which list it is included. इतना समझ आ गया? This point is very important for prelims. आपको पता होना चाहिए ये कौन सी लिस्ट में आता है. Now this question can be asked in GS paper 2. Critically comment. Critically comment मतलब होता है bring out the pros and cons of the topic. जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए ना कि क्रिटिकली कमेंट करो, तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज भी करना है प्लस पॉजिटिव साइड्स भी दिखाने हैं, यानी कि प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स निकाल के रखने हैं. सो क्रिटिकली कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रियल एस्टेट एक्ट. ये जो रेरा है ना, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताने हैं. फीचर्स इंपॉर्टेंट बताने हैं, क्रिटिकली कमेंट करना है उन पर, यानी कि उसके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों दिखाने हैं. एग्जामिन हाउ दीज फीचर्स विल हैव बियरिंग ऑन कस्टमर्स पे इनका क्या इम्पैक्ट होगा, ये एग्जामिन करना है, यानी कि आपको अपना ओपिनियन सामने रखना है. What are the objectives of RERA? It enhances transparency and accountability in real estate transactions. It boosts domestic and foreign investment, provide uniform regulatory environment to solve the disputes and issues between the real estate owner and the customer, promote orderly growth through efficient project execution and standardization. Standards maintain करता है ये act real estate area में. Offer single window system for clearance of real estate projects and empower and protect the right of home buyers. And what are the features? Independent regulatory authority will be there. Prevention of diversion of funds, mandating consumer protection measures and mandatory registrations with RERA so that the customers are, you can say they are not, their interest is not violated. All right.
So what are the criticisms of the act? जब आपसे critically examine बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि आपको criticism भी निकालने हैं इसके. First is grant industry status. The builder lobby has been demanding industry status for the real estate sector, as it would help in availability of bank loans. अभी ना बैंक लोन्स में बड़ी दिक्कत आ जाती है जब रियल एस्टेट सेक्टर की बात आती है. ओनर्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है जब बैंक लोन्स लेने की बात आती है. तो ओनर्स का कहना ये है इस एक्ट में इंडस्ट्री स्टेटस नहीं दिया गया, हमें इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को बैंक लोन्स लेने के टाइम पर प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े. Failure of the authorities. Real estate companies say that most delays are because of the failure of authorities to grant approval or sanctions on time. An act is silent on the force majeure. While the act addresses some of this, it does not deal with the concerns of developers regarding the force majeure. Force majeure means acts of God outside their control, which result in a shortage of labor or issues on account of there not being a central repository of land titles or deeds. These are the three criticisms which are haunting this particular act. Next important topic is India starts sharing maritime data. The Information Fusion Center, underline Indian Ocean region का जो Information Fusion Center है, it was set up last year. Last year इसको set up किया गया था. It has started functioning as an information sharing hub for maritime data and queuing incident responses to maritime security stations through a collaborative approach. Last year, this particular center was for the Indian Ocean region. It was opened up in order to share the maritime data related to the oceans and the activities going on in the oceans, right? It has now started functioning as one. The Navy's Information Fusion Center Indian Ocean region is in Gurugram. It is the single point center linking all coastal radar chain networks. It tracks this box, the information given in the box, you have to write it down in your register. ये जो information दी गई है ना इस बॉक्स में, ये आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए. IFC means Information Fusion Center. It tracks and monitors 1.5 lakh shipping vessels in real time round the clock. It actively interacts with maritime community and has already built linkages with 18 countries. The major centers with which regular exchange of maritime security information is being undertaken include Virtual Regional Maritime Traffic Center, Maritime Security Center in Africa, Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy, Armed Robbery, Information Fusion Center Singapore, and International Maritime Bureau Piracy Reporting Center. So basically Horn of Africa और जैसे कि कंट्रीज हो गए इरिट्रिया, सूडान, उन कंट्रीज के साथ और सिंगापुर के साथ हम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. Okay everyone, clear? This much is clear? So this was all for today. I hope you enjoyed the class. If you really enjoyed the class now, then do like the video, share it with other aspirants and subscribe to my channel. Thank you.